Okay. Good morning, student. Today we are starting with lesson number 14. Okay. And the name of the lesson is Basic Principles of Organic Chemistry. Basic Principles of Organic Chemistry. It is one of the very important chapter from organic chemistry point of view. See, already you may be aware of the fact that there are different branches of chemistry like physical chemistry, inorganic chemistry, and organic chemistry. So this our chapter, our lesson basically belongs to organic chemistry. Now we'll just see what is the basic about this chapter here. The first thing we can say here, the very first, organic chemistry is the chemistry of organic chemistry is the chemistry of carbon compound. That means you can take any compound, but in that all compound you will get to see carbon. So organic chemistry is the chemistry of carbon compound. So every organic compound contain carbon as one of the element. Then second point we can say there are, or I can say organic chemistry is the chemistry of carbon compound. In addition to carbon, in addition to carbon, organic compounds also contains some elements, in addition to carbon. Definitely they all will have the carbon in, but in addition to carbon, organic compound also contains some elements like hydrogen, oxygen, nitrogen, etc. Means they will have the element, but in addition to that, they'll have hydrogen, oxygen, nitrogen, all elements are there. Correct? Now, also we can say there are some organic compounds which contains only one carbon atom. There are some organic compound which contain only one carbon atom. For example, methane, which you must have studied in your previous standard, that methane contains only one carbon atom. So there are some organic compound which contains only one carbon atom, but at the same time, there are organic compounds. Which contains billions of carbon atoms. For example, DNA. DNA is what? DNA is
ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक acid. See, means what I want to say from this point, there are some organic compound, but they contain only one carbon atom. Correct. At the same time, there are also some organic compound which contain billions of carbon atoms. Means we have an organic compound which contain only one carbon atom or many more, and there are organic compound which contains what, billions of carbon atom. Okay, so these are all general part. Also we know that the importance of organic chemistry, the importance, the organic, or you can say the organic chemistry is used in the different industries. Like I can say importance of organic chemistry means which are the different areas, which are the different field in which we use the organic chemistry, or the knowledge of organic chemistry, or the areas in which we use the organic compound. Correct. So importance of organic chemistry, just small to get the idea that organic chemistry or compound are used in the basically in the food industry. The various type of the food what we have, the carbohydrate, protein, food, they all contain the organic compound. Food industry. Then we can say second one is the very common industry, that is pharmaceutical industry. Pharmaceutical industry means what, all the different types of medicine what we get, the medicine, tablets, all different type of things, medicinal thing which we get are from the pharmaceutical industry. Even we can say textile industry. Textile industry means all the different type of clothes we get, nylon, cotton, they all contains the organic compound. And just add to it one more, I'll say plastic industry. The different type of the plastics we get, they are polymer, and all polymer plastics also obtained from the organic compound. So these are the few example, like these are the different areas in which we use the knowledge of organic chemistry, like in the food industry, in pharmaceutical industry, in textile industry, and in the plastic, and many more. Correct. So this is all just basic. This is a basic, and I can call this as the introduction. This is introduction to our chapter. A basic thing. So what is organic chemistry? Organic chemistry is the chemistry of carbon compound. In addition to carbon, they also contain the other element like hydrogen, oxygen, nitrogen, etc. There are some organic compound which contain only one carbon atom, but at the same time, there are some organic compound which also contain billions of carbon atom. And the knowledge of organic chemistry is also used in the different areas, like in the food industry, pharmaceutical industry, textile industry, and in plastic industry. Okay. Now we'll start with our main topic. Okay. The very first thing, because we have just said in organic chemistry, the one of the main element is carbon, correct? So if you see here, and other element is hydrogen. So if I'll say hydrogen atomic number is 1. So its electronic configuration is 1. Okay, hydrogen atomic number is 1. So electronic configuration is 1. And we know that in the first orbit, atom tries to complete its duplet. मतलब अगर कोई भी एटम के पास अगर एक ही शेल है, या कोई भी एटम के पास अगर एक ही ऑर्बिट है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करेगा. और अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा.
and then it will become a stable. So we know that hydrogen atomic number is 1, electronic configuration is 1. So therefore, hydrogen atom will try to complete its duplet. It will try to complete its duplet when you try to have 2 electrons. So how? So it will gain 1 more electron, or it will share this electron with some other atom, and therefore हाइड्रोजन को और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चाहिए अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए. इसीलिए the valency of hydrogen atom is 1. मतलब हाइड्रोजन का वैलेंसी हमेशा हमें कितना लेना है? 1 लेना है. हाइड्रोजन का वैलेंसी 1. वैलेंसी का मतलब क्या हुआ है? हाइड्रोजन एटम is capable of forming, hydrogen atom is capable of forming one bond with other atom. This basic मतलब actually how they form, that will see later on, but खाली इतना ध्यान में रखना कि हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है. करेक्ट. हाइड्रोजन का वैलेंसी अगर 1 रहेगा तो हाइड्रोजन कोई भी एटम के साथ कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा? ओनली 1 बॉन्ड. मतलब हाइड्रोजन को अगर किसी एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म करना है तो हाइड्रोजन एटम विल फॉर्म ओनली 1 बॉन्ड विद अदर एटम्स. करेक्ट. सेकंड, this is one about the hydrogen. Then we take carbon. Carbon atomic number is 6, or more than carbon. I'll just take the second element here is oxygen, whose atomic number is 8. Oxygen atomic number is 8. Electronic configuration is 2, 6. Okay, so oxygen has 6 electron in the outermost shell. Oxygen has 6 electron in its outermost shell, and therefore to complete its octet, oxygen atom required 2 more electrons to complete its, because यहाँ पे सेकेंड शेल है, और सेकेंड शेल में अगर कोई भी एटम को अगर सेकेंड शेल ऑनवर्ड अगर कोई भी एटम को अगर स्टेबल होना है तो इट रिक्वायर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. तो ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हाउ मेनी मोर इलेक्ट्रॉन रिक्वायर? 2 मोर इलेक्ट्रॉन, एंड देयरफॉर वी कैन से valency of oxygen is 2. मतलब ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है. वैलेंसी 2 मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन एटम is able to form, oxygen atom is able to form 2 bonds with other atoms. मतलब ऑक्सीजन कहाँ पे भी रहेगा, ऑक्सीजन कोई भी स्ट्रक्चर में रहेगा, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा? 2 बॉन्ड. सो ऑक्सीजन एटम is able to form 2 bonds with other atoms. Correct. I'll repeat again. Oxygen atomic number is 8. Its electronic configuration is 2, 6. It requires 2 more electron to complete its octet, and therefore the valency of the oxygen is 2. So oxygen atom is able to form 2 bonds with the other atom. मतलब ऑक्सीजन दूसरे एटम के साथ मैक्सिमम कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं? 2 बॉन्ड. ये ऑक्सीजन के बारे में. नेक्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन. atomic number is 7. Electronic configuration is 2, 5.
Nitrogen atomic number is 7, electronic configuration is 2, 5. Now nitrogen has got 5 electron in the valence shell, correct? Nitrogen has 5 electron in the valence shell. So to complete its octet, it will require how many more electrons? 3 more electron. So I can write here, to complete its octet, the nitrogen को अपना octet complete करने के लिए how many more electron? 3 more electrons. To complete octet, nitrogen atom required 3 more electrons. Nitrogen atom required 3 more electrons, correct? And therefore, valency of nitrogen atom is 3. The nitrogen का valency कितना रहेगा? 3 रहेगा. Nitrogen का valency 3 है, मतलब nitrogen atom is able to form 3 bonds with other atoms, correct? So therefore, nitrogen atom is able to form 3 bonds with other atoms. So 3 bonds. So what we see here, nitrogen atomic number is 7, electronic configuration is 2, 5, correct? So outermost shell में 5 electrons है. तो अगर इसे अपना octet complete करना है, तो require how many more electron? 3 more electron, because 5 plus 3 8. तो इसीलिए नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना आएगा? 3 आएगा. एंड वैलेंसी 3 है, इसीलिए नाइट्रोजन एटम इज एबल टू फॉर्म 3 बॉन्ड्स विद अदर एटम. मतलब अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी फॉर्मूला रहेगा और अगर उसके अंदर नाइट्रोजन एटम है, तो नाइट्रोजन एटम वहां पे कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा? 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा. नाइट्रोजन एटम इज एबल टू फॉर्म 3 bonds with other atom. So what I've done so far, hydrogen valency is 1, so able to form only 1. Oxygen valency is 2, so able to form 2 bonds. And nitrogen valency is 3, so able to form 3 bonds. And the last and the main element which we have to study here, carbon, atomic number is 6. Electronic configuration 2, 4. Carbon has 4 electron in the outermost shell. Carbon has 4 electron in the outermost shell. Therefore, to complete its octet, 4 electrons है, तो octet complete करने के लिए और 4 electron चाहिए. So therefore, to complete its octet, carbon atom required 4 more electrons. Carbon atom require 4 more electron, and therefore valency of carbon is 4. मतलब कार्बन का वैलेंसी कितना रहेगा? 4 रहेगा. तो हमें कोई भी स्ट्रक्चर रहेगा, कोई भी एग्जांपल रहेगा, फॉर्मूला रहेगा, उसमें कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा? 4 बॉन्ड. सो वी कैन से देयरफॉर द कार्बन एटम is able to form, carbon atom is able to form 4 bonds with
other atoms. Carbon atom is able to form 4 bonds with other atom. तो ये 4 एलिमेंट्स के बारे में आपको अच्छी तरह से स्टडी करना है. तो क्या क्या बोलोगे आप? अगर कोई भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन एटम रहेगा तो हाइड्रोजन एटम कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा? कोई भी स्ट्रक्चर में अगर हाइड्रोजन एटम रहेगा तो हाइड्रोजन कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा? ओनली 1. ऑक्सीजन कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा? ओनली 2. नाइट्रोजन कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा? ओनली 3. एंड कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा? ओनली 4. ये हमेशा ध्यान में रखना. मतलब अगर कोई भी स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, अगर कोई भी स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड मतलब एक ही बॉन्ड फॉर्म करेगा. ऑक्सीजन हमेशा 2 ही बॉन्ड फॉर्म करेगा. नाइट्रोजन 3 बॉन्ड will be able to form and carbon will be able to form only 4 bond. ये अगर आपके दिमाग में फिक्स रहेगा, परफेक्ट रहेगा, तो आपका कोई भी स्ट्रक्चर गलत नहीं होगा. ओके, सो आई जस्ट रिपीट हियर वंस अगेन. तो ये ध्यान में रखना है. वैलेंसी ऑफ द हाइड्रोजन इज 1, वैलेंसी ऑफ द ऑक्सीजन इज 2, valency of the nitrogen is 3, and the valency of the carbon is 4. Correct? Yes. Now we are going for the next heading, the structural representation of organic molecule. Structural representation of organic molecule. Structural, how to write down the structure. So in that first one, we'll go for the first one. We'll go for electron dot structure. The first one is electron dot structure, and electron dot structure can be also called as Lewis structure. Electron dot structure can be also called as the Lewis structure. This also you must have seen in your previous standard, but we'll just take 1 or 2 examples. Correct? So structural representation of organic molecule, मतलब organic molecule का structure हम लोग कौन कौन से अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं. तो उसमें सबसे पहला जो कॉमन जो आपने ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड में स्टडी किया होगा, विच इज 1 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, and electron dot structure is also called as a Lewis structure. I'll take a simple example which you must have studied. The simple example I can take it over here is, what is electron dot structure? Or electron dot structure means what? In this structure, in these structures, arrangement of electrons are shown, or in this structure arrangement of electrons are shown around the atoms in a molecule. देखो, what is electron dot structure? In this structure, arrangement of electron, मतलब electrons का arrangement दिखा है कहाँ पे? The arrangement of electrons around the atom
इन ए मॉलिक्यूल, मतलब हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल रहेगा, मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एटम्स रहेंगे, एटम्स के सराउंडिंग में हमें क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन्स लिखना। ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? इन दिस स्ट्रक्चर the arrangement of electrons are shown around the atoms in the molecule. Just to make more clear, I'll take one example, two example. I'll take the first one, like methane. Methane, now we know the formula of the methane is CH4. We know that the formula of the methane is CH4, correct? Now here we know carbon. So carbon has got 4 valence electron. Because we should remember now, carbon has 4 valence electrons. So I'll write 1, 2, 3, 4. Carbon has a 4 valence electron. Okay, one carbon, and each carbon atom has got 4 valence electron. How many hydrogen atoms are there? 4 hydrogen atoms. 4 hydrogen atoms. So I'll just write here 1, 2, 3, 4. 4 hydrogen atoms. And we know that the valency of the hydrogen atom is 1. Valency of hydrogen atom is 1. The hydrogen 1. But each hydrogen atom has 1 electron. 1, 1, and 1. So this is called as a electron dot structure of methane. This is called as a electron dot. Why dot? Because electrons are shown in the form of the dot. And since we are showing, because carbon has 4 valence electron, and every hydrogen atom has 1 electron. Every hydrogen atom has 1 electron. Every hydrogen atom has 1 electron, and electron we are showing in the form of dot, and that's why it is called as the electron dot structure. And this concept was discovered by a person called as a Lewis. Some people called as a Lewis also. So this called as a Lewis structure. Okay. ओके, नाउ हियर इन दिस स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1, 2, 3, 4. तो कार्बन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेगा 5, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेगा 6, यहाँ पे एक शेयर करेगा 7, और यहाँ पे करेगा तो 8. कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है. देखो कार्बन के पास ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So now carbon has 8 electron in its surrounding. So carbon is able to complete 8 ऑक्टेट. और हाइड्रोजन के बारे में देखो, हाइड्रोजन का खुद का एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2, एंड 1 + 1 2. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन एटम इज एबल टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट. मतलब कार्बन भी स्टेबल हो रहा है और हाइड्रोजन भी स्टेबल हो रहा है. कैसे? कार्बन इज कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट and hydrogen atom is completing its duplet. Okay, ये example है, but this structure is called as a dot structure where electrons are shown in the form of dot. Okay, I'll take one more example. Example, that is ethane. Ethane. Ethane formula we know that is C2H6. Maybe you must have done in the earlier standard. Ethane, the formula of the ethane is C2H6. So how many carbon atoms are there? 2 carbon atoms. So let's write 1, and then I'll write 1. 2 carbon atoms. There are 2 carbon atoms. Okay. Then how many each carbon atom has how many valence electron? Each carbon atom has how many valence electron? 4. So I'll just write here 1, 2, 3, 4. Again here we'll write 1, 2, 3, 4. Correct? Because we know that every carbon atom has a 4 valence electron. So यहाँ पे 4 electron आ गए. How many hydrogens are there? 6. I'll write here 1, 2,
3, 4, 5, 6. 6. So there are 6 hydrogen atom. There are 6 hydrogen atom. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. What is the valency of the hydrogen? What is the valency of hydrogen? The valency of the hydrogen is 1. And because the valency of the hydrogen is 1, hydrogen atom is able to form only one bond. Only one bond. So यहाँ पे one electron. Because every hydrogen atom has one electron. So 1. Yes. So this is called as a dot because see carbon is having 4 electron around it here, and this structure is called as a electron dot structure. अभी देखो हर एक एटम अपना हाइड्रोजन क्या करेगा, उसके पास उसका खुद का एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो क्या कंप्लीट करेगा, डुप्लेट. तो देखो ये हाइड्रोजन के पास देखो 1 2 डुप्लेट, 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 1 2. So every hydrogen atom is able to complete its duplet. Every hydrogen atom is able to complete its duplet. Okay. और कार्बन, कार्बन देखो अभी यहाँ पे ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये कार्बन यहाँ पे शेयर करेगा 5, यहाँ पे शेयर करेगा 6, यहाँ पे शेयर करेगा 7 और यहाँ पे शेयर करेगा 8. तो कार्बन इज ऑल्सो एबल टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. यहाँ पे देखो कार्बन 1 2 3 4 5 6 7. To carbon is able to complete its octet. So what we are seeing in both the example, the arrangement of electron around the atom in a molecule. Molecule कौन सा दिया हुआ है हमें, इथेन. इथेन में कौन से एटम दिए हुए हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन, और उनके सराउंडिंग में हमने इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं. तो दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. ओके. सो दिस वे अगर आप अलग अलग एग्जांपल लेते हो तो उनके लिए भी आप लिखना पड़ेगा. एटलीस्ट टाइपिंग के लिए 2 कंपाउंड स्टडी करो, मीथेन एंड इथेन. सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? इन दिस स्ट्रक्चर्स now we'll go going for the next heading, that is structural formula. Structure. Now what is structural formula? The formula which shows the arrangement the formula which shows the arrangement of atoms in a molecule. The formula which shows the arrangement of atoms in a molecule. हमारे पास जो मॉलिक्यूल रहेगा उस मॉलिक्यूल्स में क्या रहेंगे, एटम्स रहेंगे, और उस एटम्स का अरेंजमेंट किस तरह से. मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स है, द मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ एटम. ओके. और जो एटम्स है उनका अरेंजमेंट कैसा है, दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. करेक्ट. ओके. देन हियर always remember one point here. I'll take the same example. Suppose I'll take example here, methane. Methane, CH4.
methane CH4. Now one carbon atom. So I'll write one carbon atom. Okay, one carbon atom. Now here in the carbon atom, we know that carbon is able to form how many bond? Carbon का valency 4 है. Carbon is able to form how many bond? 4 bonds. I'll write 1, 2, 3, and 4. Correct? Carbon is able to form 4 bonds because the valency of the carbon atom is 4. Then how many hydrogen atoms are there? 4. The number of hydrogen atoms are 4. So I'll write here 4 hydrogen atom. 1, 2, 3, and 4. And we know that hydrogen valence is 1. Hydrogen valence is 1. So hydrogen can have how many bond? 1. See, this hydrogen having 1 bond. This hydrogen atom is having 1 bond. This hydrogen having 1 bond with carbon atom. And this hydrogen atom is also having only 1 bond with the carbon. What we have seen here, as per the valency, hydrogen atom is able to form only 1 bond with other atom. And carbon atom is able to form 4 bond with other atom. ये हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्म है, मतलब कार्बन एटम सेंटर में है और उसके आजू बाजू में हाइड्रोजन. अभी देखो एक सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है. एंड वन सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आप लिख सकते हैं, वन सिंगल बॉन्ड सिंगल. और ये कौन सा टाइप का बॉन्ड है? कोवैलेंट. तो वन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. व्हाई कोवैलेंट बॉन्ड? बिकॉज यहाँ पे देखो इस एग्जांपल में कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं. और जब दो एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, देन वी कॉल देम व्हिच बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड. देखो, कार्बन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन विद हाइड्रोजन, कार्बन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन विद हाइड्रोजन, कार्बन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन विद हाइड्रोजन. तो जब कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ अगर शेयर करेगा, कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ अगर इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो उनके बीच में क्या फॉर्म होगा? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यू टू अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर. द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे एक बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड फॉर्म होगा, ये और एक बॉन्ड फॉर्म होगा, ये और एक बॉन्ड फॉर्म होगा, ये और एक बॉन्ड फॉर्म होगा. वैसे यहाँ पे देखो 4 बॉन्ड था. So what is one single covalent bond is made up of 2 electrons. ये आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लिखा हुआ है, तो ये सिंगल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना हुआ रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन. और ये सिंगल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड रहेगा? कोवैलेंट बॉन्ड. व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? द बॉन्ड which is formed, the bond which is formed due to sharing, the bond which is formed due to sharing of electron pair are called, the bond which is formed due to sharing of electron pair are called as a covalent bond, are called as a covalent bond. तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर, ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, ये भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, ये भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है. तो हियर द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड एज अ कोवैलेंट. तो दोनों एटम अगर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बाद जो हमें बॉन्ड मिलेगा, इट इज कॉल्ड एज अ कोवैलेंट. करेक्ट. आई टेक ए नेक्स्ट एग्जांपल. ethane. Ethane, the formula is C2H6. C2H6. How many carbon atom? 2 carbon atom. So 1 and 2. 2 carbon atom. Every carbon atom valence is 4.
So every carbon atom is capable of forming how many covalent bond? 4. So 1, 2, 3, 4. Correct. Similarly, this is also carbon atom. Its valence is also 4. It is also capable of forming how many bond? 4. So already 1 is there. 2, 3, 4. Correct. Now then, how many hydrogens are there? See, first carbon atom is forming 4 covalent bond. Second carbon also has got 4 covalent bond. Now how many hydrogens? 6. So I'll write here 1, 2, 3, 4, 5, and 6. देखो. So in this structure, every hydrogen atom is able to form a 1 bond. क्योंकि हाइड्रोजन का वैलेंस 1 है, तो हाइड्रोजन कहाँ पे भी रहेगा, कोई भी स्ट्रक्चर में रहेगा, कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा? 1 बॉन्ड. यहाँ पे 1 बॉन्ड है, यहाँ पे भी 1 बॉन्ड है हाइड्रोजन का. 1, 1, 1, 1, and 1. So every carbon is able to form 4 bond with the neighboring atom, and every hydrogen atom is able to form 1. करेक्ट. और देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, ये दो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ, यहाँ पे एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ. ऑलवेज रिमेंबर दैट one single covalent bond is always made up of how many electron? 2 electron. One single covalent bond is always made up of 2 electrons. Okay, तो ये हमारा ethane है. Just take one more example. I'm taking the example which you all must have studied in the previous standard. Next example is the propane. Propane. The formula of the propane is C3H8. The formula of the propane is C3H8. How many carbon atoms are there? 3 carbon atoms. I'll write 1, 2, 3. The valency of the carbon is 4. So carbon is able to form how many bonds? 4 bonds. So I'll write 1 for this. 1, 2, 3, 4. Second carbon atom. Already 1 bond is there. 1, 2, 3, 4. Third carbon atom. Already 1 bond is there. 1, 2, 3, and 4. Okay. So every carbon atom is forming the 4 bond with the neighboring atom. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. मतलब इतना मालूम होना चाहिए, कार्बन के सराउंडिंग में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड रहेंगे? कार्बन के सराउंडिंग में हमें कितने बॉन्ड्स रहेंगे? 4 ही रहेंगे. 4 से कम नहीं और 4 से ज्यादा नहीं. फिर हाइड्रोजन. हाउ मेनी हाइड्रोजन आइटम्स आर देयर? 8. So I'll just write here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 8 hydrogen atom. और अगर आप नोटिस करोगे, every hydrogen atom is able to form only 1 bond. देखो यहाँ पे 1 bond आ रहा है. 1 every मतलब हमेशा हाइड्रोजन कहाँ पे भी रहेगा, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा? ओनली 1. ये हमारा रहा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. So what is structural formula? The formula which shows the arrangement of atoms in the molecule. मतलब हमारे जो molecules दिया रहेगा, molecules के अंदर जो atoms रहेंगे उनका arrangement किस तरह है. करेक्ट. देखो ये हमारा molecular formula है, ये molecules है, ये molecules के अंदर के atoms है, और ये atoms का arrangement कैसा है. तो this kind of arrangement is called as a structural formula. Correct? Are called as a structural formula. Okay. So with this we'll stop it over here and the remaining part we'll do it in the next lecture. तो आज हमने क्या देखा है यहाँ पे? 2 टाइप के स्ट्रक्चर. सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है हमें कि हमें 4 एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करना है. कौन से 4 एलिमेंट? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन. दूसरा क्या ध्यान में रखना है? हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, नाइट्रोजन वैलेंसी 3,
and carbon valency 4. मतलब hydrogen is able to form only one bond, oxygen is able to form only two bond, nitrogen is able to form three bond with other atom, and carbon is able to form four bond. उसके बाद हमने क्या स्टडी किया था, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. What is dot structure? In which we show the arrangement of electron around the atom in a molecule. और उसके बाद क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, in which we shows the arrangement of atoms in a molecule, arrangement of atoms in the molecule. Okay, so all these you can write down in the notebook, and remaining part we'll do it in the next stage. Okay, thank you.